आपका इंटरेस्ट कैसे बना सिक्योरिटी फील्ड में? तो अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताएं। ओके, तो आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े? आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बताइए। आप उसमें आपने क्या सीखा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में काम किया? कैंपस प्लेसमेंट हुई थी या आउटसाइड? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो आप अपनी पहली कंपनी के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट किया आपने? इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना डिफिकल्ट होता है डोमेन स्विच करना, और किस तरीके का इंटरव्यू रहा, क्या क्या पूछा गया? तो आप आपने कितने इंटरव्यू दिए स्विच होने के लिए? तो उसमें एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन मोस्टली जो इंटरव्यू पूछता है, इन विच लैंग्वेज यू मोस्टली कोड, और यू विच लैंग्वेज यू लर्न, specific technology or tool you use in ZScaler, why or when to change any company, what certification you've done, और बेसिक सर्टिफिकेशन कौन सा सबको करना चाहिए। आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। तो आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते हैं? वन लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी चीज़ें बिजनेस को करनी चाहिए और जो इस डोमेन में नहीं है, सिक्योरिटी डोमेन में? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट नितिश। आई एम अ सॉक एनालिस्ट एट बिल्डा सॉफ्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं रितो मान। ही इज़ एट जी स्केलर एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। सिक्योरिटी कंसल्टेंट से इन्होंने सिक्योरिटी रिसर्चर में आया तो उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टी फेस करी और कैसे काम डिफरेंट होता है। सो हाय रितो मान, हाउ आर यू? प्लीज Hi. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So I'm Ritoban and I'm a security researcher. My main field of interest is in malware development and reverse engineering. I love studying adversarial tactics and looking into malwares, developing malwares, and learning about malware techniques. I also have a blog where I put my research so that everyone can learn from it. Right? So that's about me. इंटरेस्ट कैसे बना सिक्योरिटी फील्ड में? मैं जब क्लास 12 में था, आई वॉज लाइक वेरी वेरी क्यूरियस, राइट। आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ कोडिंग, बट मेरे को लगता था कि क्या मैं कोडिंग से ये कर सकता हूँ। आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक द रूल्स, राइट। सो वहां से जाके आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट कि इसका फेसबुक हैक हो गया, इसका वो मोबाइल नंबर से कुछ हैक हो गया। सो आई स्टार्टेड लर्निंग about those things on the internet. Right? फिर मैंने जब कॉलेज में स्टार्ट किया, that's where I met a few like-minded people who were also interested in hacking, and it was that time जब मैं प्रॉपर हैकिंग में घुसा। I started learning about Kali Linux, Metasploit, and slowly I came to know about reverse engineering from one of my seniors, and उसके बाद I was like deeply into binary exploitation and reverse engineering. I played a lot of CTFs. ऐसे ही मेरा मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गया। तो अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताएं। कॉलेज लाइफ कैसे करी, कब क्या हुआ, कैसे सिक्योरिटी फील्ड में आप ज़्यादा डीप डाउन हो गए कि हाँ मुझे यही करना है? जैसे मैंने बताया कि आई वाज always interested in cybersecurity, and when I uh, when I was initially doing security, when I was initially practicing and learning about security, I was mainly learning about pen testing, right? Basic pen testing, Wormhub, Hack the Box, Try Hack Me, and the pen testing tools as well. तो uh, तो उस टाइम पे मैं सर्च करता रहा यूट्यूब पे दैट जॉन हैमंड वाज टीचिंग, लाइव ओवरफ्लो वाज देयर। लाइव ओवरफ्लो बाद में यूज किया, बट हैकर्सप्लॉइट इज आल्सो देयर। सो आई वाज लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज यूट्यूब चैनल्स, एंड धीरे धीरे आई केम टू नो अबाउट दैट देयर आर आल्सो जेपर्डी स्टाइल सीटीएफ कॉम्पिटिशंस। तो वहाँ पे मैं uh, I started doing binary exploitation challenges and reverse engineering challenges. I also joined a few groups, like CTF groups, where I was able to share knowledge. So throughout the second year of my college, I was very, very involved in uh, CTF challenges. But जब COVID पड़ा, there was a little break in the college studies. So उस time पे I started upscaling myself, and I also focused most of my time into learning new things. At that time, I decided around when I was in third year, so I decided that I'd do OSCP, and वहाँ से जाके I shifted my focus to more towards red teaming. Right?
And as I was doing more of red teaming, no, I learned about malware development and all that stuff. ओके, सो आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी इन कॉलेज, एनी? When you were in college, right? मेरा जैसा था कि I had no option of specializing in cybersecurity in my college, so I had to study the usual computer science का subject. तो लेकिन जो subjects help किया मेरे को, they were networking, network security, and operating system, right? So these are very, very important if you want to get into cybersecurity. सो आपने, आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बताइए, आप फायर कैंपस में किए हैं, इसमें आपने क्या सीखा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में काम किया? When I was working in working at FireCompass, I was mostly learning about adversarial tactics. ये क्या जो होती है मैं बोल एग्जैक्ट, थोड़ा okay, एक्सप्लेन। so basically okay, right. So जब कोई एडवर्सरी, कोई एक हैकर, हाँ, आपके सिस्टम पे घुसता है, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस दैट ही फॉलोज, राइट? सो लेट्स से उसको क्रेडेंशियल्स मिला थ्रू ब्रूट फोर्सिंग या फिर पासवर्ड गेसिंग, ही वेंट इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम, तो उसका हो गया इनिशियल एक्सेस। सो फिर उसको चाहिए होगा कि आई हैव टू escalate privilege, so he has to do a privilege escalation. So there are lots of techniques about privilege escalation. फिर उसको करना पड़ेगा कि आई हैव टू पुट सम परसिस्टेंस, कि मैं बाद में आके उसको फिर से एक्सेस कर पाऊँ, राइट? तो उसको परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, देन ही हैज टू लाइक एक्सफिल्ट्रेट डेटा, फिर हो जाएगा, फिर ही हैज टू क्लीन अप हिज ट्रैक्स। तो ये होता है कि उसका पूरा एडवर्सरियल टैक्टिक्स। सो अंडर ऑल ऑफ दीज स्टेप्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ways to persist on a computer system. आप एक कोई क्रॉन जॉब लगा सकते हो जो बार बार एक C2 सर्वर पे कॉल करेगा, कोई एक malicious रिपीटेटिव कोड को रन कर, टास्क, हाँ, के लिए हाँ आप। हाँ हाँ, आप कोई सर्विसेज रन कर सकते हो। सो ऐसे आप कोई यूजर रख सकते हो। सो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ परसिस्टेंस। तो इन सबको मिला के होता है एडवर्सरी का टैक्टिक्स। कोई एडवर्सरी काम करेगा तो उसका टैक्टिक्स होगा। ओके, देयर आर लाइक, तो हमने ये इंटर्नशिप में यही सब सीखा, आपने ये सब मेथड फॉलो किए? हाँ ओके, हाँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज आल्सो डूइंग पेन टेस्टिंग, फिशिंग कैंपेन्स, तो ये सब तो होता था। कैंपस प्लेसमेंट हुई थी या आउटसाइड, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो बेसिकली मेरे कॉलेज पे देयर वाज नॉट मच opportunity in cybersecurity from the campus placement, right? So I decided that I wouldn't sit in any of the campus placement, and I was confident that I had to do something like outside of campus. नाइस Otherwise, चॉइस, I cannot do. आई आल्सो डू I द cannot सेम। do. I write down the letter to head of management, don't call me in any interview. Right. There were like so many companies that are taking for software developer, right? And there were no opportunities for cybersecurity. So uh, I was like, okay, I have to whatever I do, I have to do myself only. There was one company at my college that was hiring for security position, that was PwC, right? I didn't get there. There was aptitude test, and I totally flunked at the aptitude test. I It can't doesn't, stand aptitude tests. कोच की वैल्यू नहीं मुझे लगता है। कॉलेज में एप्टीट्यूड ये सब क्या ही पूछते हैं। हाँ वही तो, मैं बैठ नहीं सकता 1 घंटे से ज्यादा, मेरे को दिमाग में नहीं घुसता है, दिमाग सुन पड़ जाता है। तो वही मतलब तो वैल्यू कहाँ आपको ज़्यादा मिलती है, आउटसाइड में कि इनसाइड में, कि आपको उस वैल्यू, आप जो आप वैल्यू होल्ड करते हो उसकी रियल वर्थ आपको कहाँ मिलती है, आपको क्या लगता है? अगर आप शो कर सकते हो कि आपका वैल्यू है सच में, हाँ, आप टूल पब्लिश कर रहे हो, आप सीवीज पब्लिश कर रहे हो, आप राइटअप्स पब्लिश कर रहे हो, एंड यू आर शोइंग द कंपनीज दैट यू रियली आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, देन आई थिंक आपका बाहर वर्थ ज्यादा होगा। बट स्टिल डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, इफ योर कॉलेज इज ब्रिंगिंग
more companies that are oriented to cybersecurity, I think that is much more better. ओके। Right? आपको कॉलेज से सपोर्ट मिलता है। बाहर का इंटरव्यू ज़्यादा स्पेसिफिक होता है आपके जॉब प्रोफाइल से एज कम्पेयर टू कॉलेज प्लेसमेंट्स। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। कॉलेज हाँ में तो बहुत कॉलेज। जनरल पूछते हैं, बाहर तो स्पेसिफिक आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ। सो आप अपनी पहली कंपनी के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट किए आपने? So when you are a security consultant, you have to do a lot of client-facing jobs, right? So let's say you are doing a pen testing, right? After you have finished pen testing properly, you have to write a comprehensive report, right? And in that report, you also have to write specific uh, fixes for the problems that you have found. अगर आपको मिला कि कोई account में there is no two-factor authentication, you have to say that okay, there is a two. You have to put two-factor authentication to make it, more suitable, more secure. सिक्योर, यस। तो हाँ, तो आपको वो रिपोर्टिंग में बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है व्हेन यू आर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, राइट? एंड आई वाज आल्सो डूइंग assume bit scenarios जहाँ पे क्या होता है, basically you are basically skipping the step of for the initial access, जहाँ पे आपको IP find out करना पड़ता है and you have to exploit the uh, web app and you have to gain code execution, and you are already given an access to a computer inside the network. वहाँ पे आपको laterally move करना पड़ता है, you have to basically gain access to the highest privilege that you can get. So I did that also. अच्छा, बेसिकली आप क्या कहते हैं, कोई कंपनी आती, क्लाइंट आता है जैसे कि, तो आप हम्म उस पे पेन टेस्ट करते हो, फिर जब आपको जो लगता है ये बग्स हैं, फिर उसकी आप रिपोर्ट तैयार हम्म करके उस कंपनी को भेजते हो कि आप ये हम्म, इम्प्रूवमेंट आप अपनी कंपनी में कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। बेसिकली व्हाट यू डू इन पेयरटू। हाँ हाँ हाँ, you have to sit with the client that you have to justify that the client will ओके, ask that हाँ, why ओके, why have you put this, ये तो ऐसे ही काम करता है। You have to justify that no ओके। सिक्योरिटी कंप्लायंस में दिक्कत हाँ आएगी। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके, सो कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी पे काम किया? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट assume based सिनेरियो होता है, तो उसमें आई मेनली वर्कड ऑन एक्टिव डायरेक्टरी, राइट? तो एक्टिव डायरेक्टरी में यू आर गिवन द लोएस्ट प्रिविलेज यूजर एंड द लोएस्ट प्रिविलेज कंप्यूटर, सो वहां से जाके आपको डोमेन कंट्रोलर पे जाना पड़ता है। सो आई हैव वर्कड ऑन दैट एंड आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ थिक क्लाइंट पेन टेस्टिंग आल्सो, जहाँ पे आपका एक थिक क्लाइंट होता है, यू हैव टू basically find out what are the bugs that thick client has, right? um, and mainly with internal networks, right? Internal and external networks, I have done pen testing on those. अपार्ट इसके बाद आपने डोमेन स्विच किया, आप सिक्योरिटी हाँ। रिसर्चर में आए, तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कितना डिफिकल्ट होता है डोमेन स्विच करना, और किस तरीके का इंटरव्यू रहा, क्या क्या पूछा गया? In my personal experience, uh, what I felt was that you have to stick to your strengths, right? You have यहाँ पे सिक्योरिटी रिसर्च में, as I have said that यू हैव टू फोकस ऑन द एडवर्सरियल टैक्टिक्स। हाँ, जैसे कि मैंने सिक्योरिटी कंसल्टेंसी में आई हैव पर्सनली अप्लाइड दोज एडवर्सरियल टैक्टिक्स, राइट? So when you are doing an assume bridge scenario and you moving laterally, so lateral movement पे uh, you are applying those techniques for lateral movement. You are applying the silver ticket technique. You are applying those Kerberos attacks. तो उसका नॉलेज आपको ingrained हो जाता है. So when someone is asking you that what will you do to stop this, you will know what you have to do to stop these. Right? Since you are doing so deep work into those techniques, आपको आ जाता है कि आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा. So if you are sticking to your strengths, I don't think कि researcher में उतना in my personal experience it's that difficult to switch. आप कितने इंटरव्यू आपने कितने इंटरव्यू दिए स्विच होने के लिए? तो उसमें एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन मोस्टली जो इंटरव्यू पूछता है? डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल, हाँ, अगर आप कंसल्टेंट के रोल में जाना चाहते हो, यू विल बी आस्क्ड अबाउट if you're doing a if it's more focused on web app pen testing or
any kind of application pen testing, you will be asked about XSS and cross-site exposure. ये उधर में चला जाता है. If you are more into like infra based, you will be asked about L-laminar poisoning and how the Nmap works, right? What are the different OSI different layers of the OSI model? वहाँ पे चला जाता है. And also active directory attacks are very, very important if you're doing an infra pen testing and some active directory pen testing comes up. You have to also know a little bit of cloud pen testing as well, because here and there you will come across a cloud infrastructure, right? Most of the clients are now shifting to cloud-based infrastructure for ease of use. तो आपको थोड़ा cloud भी जानना पड़ेगा कि how you will be pen testing on AWS or S3, how S3 buckets में कैसे आप vulnerability ढूंढोगे. You have to learn a little bit about that also. जब आप रिसर्चर के लिए ये इंटरव्यू करोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी एक्चुअली वांट्स, राइट? आपको कौन से प्रोडक्ट में आपको दे रहे हैं. सो इफ इट्स लेट्स से एन एंटीवायरस कंपनी, दे विल आस्क यू वेरी वेरी deep questions into operating systems, right? So what are hardware breakpoints, right? What does this mean in assembly? What is API hooking? How API hooking is bypassed? How will you catch those bypassing techniques that are used for API hooking? Right? And let's say that your product is uh, focused more on detecting Active Directory attacks. You will be asked about how this silver ticket attack is carried out, right? Can you explain the whole step from starting to end, right? These are mainly. आपकी सेकंड कंपनी जी स्केलर में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया, कितना डिफरेंस था सिक्योरिटी रिसर्चर में? थोड़ा ज्यादा कोडिंग होता है if you are working as a security researcher, but I have always felt that when I'm doing coding that is for a specific purpose, I like doing that type of coding. In which language you Mostly code, or which language you learn? depend करता है. So depending on the job, I keep on switching language, right? So मोस्टली अगर मैं कौन सी लैंग्वेज डेवलपर, यूज होती है तब भी? mostly C sharp, C सी sharp or शार्प. PowerShell. Since you're working with a lot of .NET internal stuff, तो ओके, वहाँ पे तो सी शार्प काम C, आती है, हाँ. अगर आप कर्नल लेवल पे काम करना चाहते हो तो C में जाना पड़ेगा, राइट? इट डिपेंड्स. जी स्केलर में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया? कौन कौन से प्रोजेक्ट में आई कांट स्पेसिफिकली स्टेट. व्हाट यू डू इन हाँ दैट प्रोजेक्ट, ये बता सकते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल हाँ रहेगा. हाँ, ओके. सो बेसिकली आई एम इन द काम क्या रहता है डिसेप्शन. मतलब सिक्योरिटी हाँ हाँ, रिसर्चर का? वर्क इज मेनली बेस्ड ऑन डिसेप्शन प्रोडक्ट्स. तो डिसेप्शन में क्या होता है, हनी पॉट्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? इट इज इवन मोर डीप, राइट? तो आप कोई एक्टिव डायरेक्टरी में घुसोगे, यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर 10 यूजर्स, अमंग दोस 10 यूजर्स 5 आर डिकॉय यूजर्स, राइट? तो अगर अटैकर उन यूजर्स को ब्रूट फोर्स करेगा, he will find out that okay, there is an attacker that is trying to brute force the user, because a normal user won't be trying to access the decoy user. उसको तो अपना यूजर से काम होगा, वो अपना यूजर में काम करेगा, he'll just log out. तो कोई अटैकर होगा वही उस यूजर को टारगेट करेगा. हाँ, तो यू कैन ऑल्सो लॉन्च डिकॉय प्रोसेसेस. हाँ, कोई लेट्स से टीम व्यूअर का कोई एक्सप्लॉइट आ गया, टीम व्यूअर बैकग्राउंड में रन कर रहा है एंड द अटैकर वांट्स टू अटैक अ टीम व्यूअर, सो देयर यू विल लॉन्च अ डिकॉय टीम व्यूअर प्रोसेस. तो अटैकर उस डिकॉय टीम व्यूअर को अटैक करेगा. तो ऐसे होता है, मतलब डिसेप्शन. स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और टूल यू यूज इन जी स्केलर? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बिकॉज जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म में वी हैव टू डिप्लॉय द डिसेप्शन, वी हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू इट. वाई और व्हेन टू चेंज एनी कंपनी? आपको क्यों लगा कि ये कंपनी मुझे चेंज करनी चाहिए? और My interest has always been understanding how the attacker tactics work in depth. हाँ, तो कंसल्टेंसी में आपको वो चांस नहीं मिलता है कि यू लुक इनटू दिस स्टफ्स इन डिटेल, राइट?
तो आपको बिट्स एंड बाइट्स आपको रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता है कि ये करना पड़ेगा। तो मेरे को वो करना था कि आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इन डिटेल, सो आई डिसाइडेड टू चेंज द कंपनी। Okay. What certification you done, or experience important है या फिर certification? I personally did OSCP when I was in third year of college, right? And later on, I also did CRTP. Uh, okay, so both of these are mostly pen testing and red teaming oriented. Uh, in my opinion, I have seen that some companies prefer, having certifications. If you have certificates, they'll give you preference. But some companies uh, do prefer what you are actually doing, what research you are publishing. If you have any CVs in your name, if you have any good tools in your name, तो वो सब भी काम आता है. But there are some companies who will always prefer, certificates. And if you think that if you think that you have that you can afford doing a certification, right? And if you are financially able to afford a particular certification, and if you think that कि वो certification का जो syllabus है, it will be beneficial for you, you should always go for that certification, right? So ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि you have to do this and do that. बेसिक सर्टिफिकेशन कौन सा सबको करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कौन सा है? वो आपको आपका गोल्स एंड आपका फाइनेंशियल सिचुएशन देख के ही करना चाहिए, राइट? अगर आपका गोल है कि यू वांट टू बिकम अ सॉक एनालिस्ट, सो यू शुडंट स्पेंड मनी ऑन ओएससीपी, राइट? अगर आपका गोल है दैट यू वांट टू become a malware researcher, you should not spend money on CRTP, right? But अगर आपका गोल है कि I want to become a red teamer, I want to become a pen tester, you can go for OSCP, but then also you have to check that are you able to afford it, because most of us come from middle class families, right? And we also have to find and look for jobs after our college. So that also becomes a lot of problem if you are going for costly certifications. तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है, are you capable of doing CRTP? CRTP is also a very good certification since I have personally done that, right? I think there are certificates by eLearn, ECPTX, uh, वो सब certifications होते हैं. And if you are doing a lot of hack the box and try hack me, that is also very beneficial, right? वहाँ पे आपका hands on experience होता है, and you are also in constant touch with the community. तो वहाँ पे आप इधर उधर पूछ सकते हो कि how do I do this, how do I do that, and they'll answer you. There are so many experienced people in the hack the box community. तो आप वहाँ पे जाके भी learn कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे practical knowledge होगा. That's the thing. आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। अगर आप मेरे ब्लॉग में देखोगे लिस्ट में कि शुरू में आई वाज डूइंग मोस्टली पेन टेस्टिंग रिलेटेड ब्लॉग्स, राइट? बाद में जाके व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट malware डेवलपमेंट, आई स्टार्टेड लर्निंग कि malware कैसे काम करते हैं, राइट? वन ऑफ द टेक्निक्स दैट आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वाज प्रोसेस घोस्टिंग. हाँ, उसमें क्या होता है, malware क्या काम करता है, दे क्रिएट अ टेम्पररी फाइल. हाँ, वो टेम्पररी फाइल डिलीट पेंडिंग स्टेट में होता है, एंड द malware विल राइट द शेल कोड, जो आपका जो मेन पेलोड होता है, स्टेज 2 पेलोड, वो उसमें टेम्प फाइल में डाल देता है. एंड सिंस इट इज इन डिलीट पेंडिंग स्टेट, नो वन विल बी एबल टू ओपन इट, राइट? वो सबको लगेगा कि वो जो एंटीवायरस होगा, दे विल थिंक दैट ओके इट इज इन डिलीट पेंडिंग स्टेट, इट विल गेट डिलीटेड, यू कैन नॉट ओपन इट. तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि a file that doesn't exist, huh? So it's a ghost process, right? Which is originating from a file that doesn't exist. So there was already a code that was written by HasherZ, and I basically decided to port it in C sharp. अगर आप C sharp पे कोई भी टूल बनाते हो, it becomes very very easy in the .NET framework, right?
आप .NET framework को deploy करते हो, it becomes very very easy during red team engagements. तो वो दिमाग में रख के I ported it into C sharp. हाँ. And I think my version was one of the first working ports of this technique. I couldn't find any other person who had done the same thing in C sharp. वो था process ghosting का. And after that, I did a blog on another technique. It's called API unhooking using Perun's part. हाँ. तो API hooking में basically क्या होता है? The Windows APIs that are used by any software, right? तो malware वो ही Windows का internal API use करता है. So what happens is the antivirus will replace this API calls and replace them with their own custom codes, so that whenever the malware is calling these APIs, it will be redirected to the AV's own memory, and the AV will be able to analyze all these API calls, right? So what malware authors do is they use something called the unhooking technique. They'll make the replaced code as original, and they will be able to use the APIs normally. So this Perun's part technique, I think it was introduced by Sector 7. I got it from one of the Sector 7 blogs. So they described that how this technique works. You create a process in a suspended state. So when a process is in a suspended state, what happens is the AV engine doesn't hook into it, right? Because the process has not fully started. Right? It's in suspended state, and only the basic DLLs like NTDLL or kernel 32 DLL has been loaded in memory. Right? Now now for the AV engine or the EDR engine to inject its code into the processor's memory, they have to wait till the process is completely able to load other modules. Right? Now since it's in a suspended state, it won't be able to load the AV engine's custom DLL and custom code. So it's not hooked by the AV engine at that point of time in suspended state. So if you are able to copy all the API calls from that process, so you will be able to use that and clean up your own hooked process. So basically, you will have an unhooked NTDLL, right? So that's Okay. one of the techniques that I wrote a blog on. And after that, the main thing that I did was I started this series called Tradecraft Improvement. Right? It's basically a series of small techniques that you can incorporate in your malwares. Right? So one of the first was the technique that completely removes the import table. Import table में आपका जो भी function call होते हैं, they are listed. Right, it is filled up by the compiler, so that when it is filled up by the loader, so that when it is loaded in memory, तो वहां से कॉल हो सके, वहां से एड्रेस लेके वो कॉल कर पाएगा. Now if you remove the complete import table, what will happen is जो APIs malware or normally use करते हैं, there is a series of there is a sequence of APIs that is checked by the EDR engines. So if they found that these sequence of APIs are being used, they'll flag that as malware, right? Even Windows Defender does that. So if you are using a sequence of APIs like virtual alloc, virtual protect, create remote thread, wait for single object. So if Windows Defender checks the sequence of APIs in the strings of that PE file, of that exe file, so it will flag it as malware. Right? So if you are able to completely remove that import table, there is nothing to flag at that point of time. So
एक और technique that I used was module stomping. In that, what happens is you run the basically load an external DLL from the disk, and you uh, execute the uh, execute the shellcode from inside that DLL, right? So what will happen is आपका जो malware threat होगा, it won't show up specifically, it won't show up separately, right? Because it is running from inside a particular DLL. So you can use these techniques and incorporate in your own malware development, and it will help you. So that was my main aim for this thing. एक अर्ली बर्ड प्रोसेस इंजेक्शन था. हाँ. तो ओके, अर्ली बर्ड प्रोसेस इंजेक्शन, अर्ली बर्ड उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली दैट जो सस्पेंडेड प्रोसेस होता है, हाँ, उसमें ईडीआर इंजन हुक नहीं कर पाता है, राइट? इट हैजंट हुक्ड इनटू इट येट, since it is in a suspended state, right? Now अब क्या होता है कि जब प्रोसेस लोड होता है, इट विल लोड द NTDLL फर्स्ट, right? NTDLL is already loaded in memory always, since it is very very crucial DLL. उसमें बहुत native APIs होते हैं that are used for loading other DLLs and initializing the process heap and the process stack as well, right? So you need the process need those APIs to load the entire process. So when it is in suspended state, only the NTDLL has been loaded and nothing else. So that means that the EDR engine's own DLL has not been loaded yet. So what you can do is, at that point of time, you can inject your code into that, right? You don't inject anywhere. There are certain objects called asynchronous procedure calls, right? They are basically Windows internal objects, right? You can define them as uh, functions, or you can call them as objects, right? So what you do is you uh, you write the shellcode in memory, and you point the APC, or the asynchronous procedure call, uh, uh, to that shellcode, and when you resume the suspended thread, it will start executing from that from that shellcode. So since you are injecting when the EDR hasn't hooked into the process, so it is called the early bird, right? You are injecting before it has hooked. So that's why Okay. it's called early bird. सो आप अपने ब्लॉग्स और गिटहब्स अकाउंट्स में आपने क्या पोस्ट किया है उसके बारे में कुछ बताएं. Mainly is to share my knowledge and to show off my work to the world. And in GitHub, whatever I post is mostly what I feel that I will use in someday in field. It's like it will come in handy this time, during this time or that time. These are mostly tools. सो आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, लाइक इन ट्विटर, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड कोई चैनल? So during my beginning days and till now, I have always followed John Hammond, IPSec, Live Overflow. If you are really into application security, you should follow Live Overflow. If you are into adversarial research and malware analysis, you can follow John Hammond. And if you want to excel in hack the box, you can follow IPSec. He also talks about other topics as well, so you can follow his channel also. Other than that, I also follow a lot of guided hacking as well. There is a channel. He used to do a lot of game hacking as well. So वो भी बहुत interesting होता है. You take concepts from the concepts from malware development and game hacking are quite similar. I have seen that कि game hacking में you go even more deeper than malware development, क्योंकि game का जो cheat engine होता है, it is very very complicated, right? It is protecting one piece of software and it is very very complicated. अगर आपने Valorant खेला होगा तो Riot का जो, हाँ,
cheat engine है, that is Vanguard. It works in the ring zero, right? It works in the kernel level, so it becomes very very difficult to hack into it. So game cheat tips hack into that also, right? So it's very very fascinating if you're into game hacking. Uh, and uh, Other than that, I used to follow a lot of hackers plot when I was doing pen testing. Right. And and once I took a subscription for Pentester Academy, and I think that was one of the best decisions that I had taken, because most of the basics of malware development, like process injection and uh, API use, Windows API usage, I took from Pentester Academy. There are certain courses of Pentester Academy that you can use. सो आपने वर्क फ्रॉम होम किया है इन कोविड डेज, और क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में? आपने ऑफिस से वर्क किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अ, सो क्या मतलब वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस का बहुत बहुत अच्छा है, बिकॉज आई थिंक यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन traveling and all, and you can directly focus on work as well as uh, on your personal studies as well. uh, uh, Once you have finished working for your office, you can just switch off, and you can concentrate working on your stuff and your research. सो इसमें आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आई हैव पर्सनली फेल्ट दैट। ओके ओके। सो करियर ग्रोथ कैसा है साइबर सिक्योरिटी में आपके अकॉर्डिंग? इट डिपेंड्स, राइट? सो if you are someone who doesn't want to grow, right, who is sticking to one particular topic, so आपके लिए difficult होगा. But if you're someone who is always hungry and who always wants to change with the new upcoming technologies, right? uh, if the new upcoming technology is cloud, so you are willing to change your skill set according to that, right? वन लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी चीज़ें बिगनर्स को करनी चाहिए, और जो इस डोमेन में नहीं है सिक्योरिटी डोमेन में, कौन कौन सी बेसिक थिंग उनको आनी चाहिए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आनी ही आनी चाहिए. यू हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स वेरी वेल. ऑपरेटिंग सिस्टम में आई एम पर्सनली सेइंग इट बिकॉज आई हैव बीन इनटू बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड malware डेवलपमेंट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक मेरे लिए एवरीडे बहुत काम आता है. तो that's why. And if you are doing specialization in cybersecurity, that is also very, very good. And databases is also there, right? So whatever you are studying, I think in one way or the other, it is always implemented in security, right? So let's say if you're learning about hardware, right, you will learn about ARM architecture. So ARM architecture has also very wide application in IoT. You are using ARM, so hacking into ARM architecture is also very very important. If you are learning hardware, that will help you in future. So if you are learning any programming language, right, that is also very beneficial. It doesn't matter what kind of programming language is that. So if you are learning C, so it will help you in malware development or kernel development. If you are learning, let's say, Python is very flexible, as we know. If you're learning Ruby, you can write Metasploit modules. So learning languages are also essential. ओके, सो थैंक यू सो मच। आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमको दिया, इतनी सब इंसाइट शेयर करी। थैंक यू सो मच।